we started this paper yesterday. So this is part 2 of this paper now. We were done with question number 1, 2, 3, and 4. And we are going to resume from question number 5 today, inshallah. Okay? And as you saw yesterday, this was a paper that was pretty difficult. Iska threshold bhi bahut low tha, 28 out of 50 for an A. That's the lowest I've seen in an M1 paper. And you'll find out why in the next 3 questions that we're going to be doing now, because in my kuch parts jo hain, they are quite tricky. Okay. All right, let's start with this. This is question number 5. So it's a start kare. So there's a railway engine of mass 75,000 kilograms that's moving up a straight hill inclined at an angle alpha to the horizontal, where sine alpha is 0.01. The engine is traveling at a constant speed of 30 meters per second. So we are given the speed. Just highlight those things. We have the angle, we have the speed, we have the mass given. The engine is working at 960 kilowatt, so power given. There's a constant force resisting the motion of the engine. So there's some resistance as well. So there's constant resistance. We have to find that resistance force. Okay, now let's represent the situation roughly on a diagram. So we've got an inclined plane, first of all. So it's at an angle like this. Or us plane ke upar, we have some railway engine. So it's moving up the hill. That means this is the direction of motion. Now, what's the angle? The angle that the plane has with the horizontal is alpha. This angle is alpha. Okay. Now, what you have to do is you have to think about the forces that are acting on this object first. Forces. So first of all, we are given that it has a mass of 75,000 kilograms. So what about the weight? Weight ke liye usko 10 se multiply kar denge. So iska weight jo hoga, wo hoga 750,000 Newton. Okay? Mass ko 10 se multiply kar diya. We got the weight of that. What else do we have? We've got the reaction force because of that. We don't really need that because hame along the plane motion dekhna hai. But if we were to represent forces, we might as well do that. ये आपका रिएक्शन है. अगर फ्रिक्शन हमारे पास होती तो फिर हमें जरूरत पड़ सकती थी उसके, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी. We'll just erase that later. Okay, so this is the reaction force that we've got. What else do we have? There is some force that is driving the engine forward. So kuch driving force hoegi. Now we don't know what that is, but we have some power given and some speed given. We can use that to find the driving force. We'll try to do that in a moment. And we have some resistance. Resistance ke side pe act karegi. It always opposes the motion of the object. Friction aapki along the plane opposite to the motion is direction mein act karegi. That's resistance. Okay. Acha, resistance ko hum kya naam dein? Isko hum F keh lete hain. Or let me actually just erase the reaction force और resistance को हम R ही कह देते हैं क्योंकि reaction हमें नहीं चाहिए यहाँ पे. हम R use कर रहे हैं यहाँ पे resistance के लिए. So the resistance को I'm representing with R here. Okay. Now, first of all, we have to find the driving force. Driving force कितनी है? और हमें एक और चीज दी हुई है उसने बताया है constant speed है, इसका मतलब acceleration 0. Right? So इस तरह के questions के अंदर हम अक्सर क्या करते हैं? We have 2 formulas that we're going to be using. One is power equals driving force into velocity. Right? In this case, we got the power given, we've got the velocity given. उससे हमारे पास driving force आ जाएगी. And then using this information, the constant speed है, तो acceleration 0 होगी. हम क्या use कर सकते हैं? We can use RF equals M into A, resultant force equals mass into acceleration. ठीक है? अब power और velocity को use करके driving force find कर लें पहले. Power is 960,000 watt. 960,000 equals the driving force into velocity. The velocity is 30. यहाँ से हमारे पास driving force आ जाएगी पहले तो. Now what's that? Can somebody tell me quickly? Okay, that's 320,000. Thank you. It can't be 320. 30 से divide कर रहे हैं तो it should be 32,000, I think. Right? Should be 32,000. Right? Sharyar, is that correct? Should be 32,000. Yeah. Okay. Acha, so that's the driving force.
Now, once we have the driving force, now we can use this resultant force equals mass into acceleration, Newton's second law. Forward forces कौन सी हैं आपके पास? You've got just the driving force, that's the forward force. Backward forces कौन सी हैं? You've got reaction. Anything else? हमारे पास weight का component भी left side पे act कर रहा है, so we have to resolve the weight component as well. Okay. अच्छा, weight के components क्या होंगे? एक तो यहाँ पे लगेगा. Again, that's not really relevant to us at this point. हमें vertical perpendicular forces तो हम उनसे concerned नहीं है. अगर friction होती है हम उसको use कर सकते थे. यहाँ पे friction नहीं है. We don't really need that. But we need the component that is acting along the plane in this direction. ठीक है? ये weight का component क्या होगा? This is always weight into sine of this angle of the inclined plane. ठीक है? अभी आप याद भी रख सकते हैं. I'll tell you the logic of that. लेकिन ये हमेशा यही होता है कि weight into sine alpha, जो आपका along the plane वाला component होता है, अगर alpha plane के angle को represent कर रहा है, तो weight के along component is always W sine alpha or mg sine alpha, as some of you are saying. So this is going to be that. W की value क्या है? W की value is 750,000. So you can write that here. 750,000 into sine alpha. That's the component of the weight that's acting in this direction. Why is that the case? Because if this angle is alpha, this angle is going to be 90 minus alpha. अगर ये 90 minus alpha हो जाएगा, तो ये angle कितना हो जाएगा? This is going to be alpha. So वो angle जब alpha आ गया, अब हम क्या किस तरह resolve करते थे? The component that is adjacent to the angle, नीचे वाला component, इसका क्या, ये क्या होएगा? ये होगा 750,000 cos alpha. The component that is on the other side of the angle, उसमें हम sin लगा देते, right? So this is the component that we have for weight here. Now we add that here as well, or in fact subtract. We say df minus r minus 750,000 into sin alpha. What's the value of sin alpha? उसने वहाँ पे ऊपर बताई हुई है. Sin alpha की value, it's 0.01. So we input that here. 0.01, that equals mass into acceleration. Now, since we've got constant speed, constant speed का मतलब है कि acceleration जो है वो zero होगी. ठीक है? तो right side पे हमारे पास essentially zero आ गया. Mass जो भी हो zero से multiply होएगा, वो आपके पास right side पे zero आ जाएगा. And then we just solve this equation to find the value of resistance. Driving force आपकी 32,000 है. 32,000 minus R minus 7,500 equals 0. You find the value of R from this, and you're telling me this turns out to be 24,500. ठीक है? ये हमारे पास resistance आ गई. Okay? Any problems with this? Good. Okay. So we found the resistance force in this part. Okay. Let's move on. Now the second part says the engine comes to a section of track which is horizontal. At the start, yeah, पूरा page क्यों दिया हुआ है? Maybe because the next part requires more space, तो उन्होंने उसके लिए पूरा page देना था, तो उन्होंने कहा they generally start the next part, a full page part on the next page like this. The next part with other space चाहिए शायद उस वजह से. But anyway, the engine comes to a section of track which is horizontal. At the start of the section, the engine is traveling at 30 meters per second. Okay, अब straight section आ गया, right? So it's no longer inclined, so it's straight now. Okay, it's horizontal. At the start of the section, the engine is traveling at 30 meters per second. So initially, उसकी speed कितनी है? 30 meters per second. And the power of the engine is now reduced to 900 kilowatt. Power change हो गई है. So it's 900,000 watts. इसमें units का बहुत ध्यान रखना है. Kilos अक्सर जो है वो मिस हो जाते हैं. आपने उसका ध्यान रखना है. किलो रखा होगा तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना. ठीक है? So do make a note of that. You have to be careful. Resistance to motion is no longer constant. Resistance constant नहीं है. ये उसने क्यों बताया resistance constant नहीं है?
रेजिस्टेंस कांस्टेंट ना होने का मतलब ये है कि जो आपके कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर्मूला हैं वो अब यूज नहीं हो सकते, बिकॉज अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगी। तो आप ना तो ये यूज कर सकते हो, ये आप नहीं यूज कर सकते, आर एफ इक्वल्स एम ए इन दिस पार्ट, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी रेजिस्टेंस आपकी फोर्सेस कांस्टेंट नहीं है, यू कैन नॉट यूज दिस, और आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी कहीं पे नहीं यूज कर सकते, ठीक है। सो कीप दैट इन माइंड, वो यहाँ पे नहीं चलेगा। इन सच केसेस वी ऑफन यूज एनर्जी मेथड्स। लेट्स सी व्हाट टू डू हियर। अभी देखते हैं, पावर की वैल्यू तो है हमारे पास, लेकिन उससे क्या क्या उसके साथ नेक्स्ट 60 सेकंड्स के अंदर जो रेजिस्टेंस फोर्स है दैट इज 46,500 किलो जूल्स। ओके, रेजिस्टेंस फोर्सेस ने दी हुई है कितनी देर के लिए? 60 seconds के लिए, ठीक है। So resistance, work done against resistance is not the force, it's the work done against resistance, that is 46,500 kilojoules. Okay, ये हमारे पास information. Now we've got power, हमारे पास time भी आ रहा है, यहाँ पे time भी आ रहा है। power और time को use करके हम क्या कर सकते हैं, हम work done by the driving force figure out कर सकते हैं, right? power और time को use करके we can figure out the driving force or the work done by the driving force using that formula. Remember, work done और power time में क्या relationship होता है? जब भी आपके पास time आ जाता है, this is often helpful, this formula, you have to use that, power equals work done over time. इससे आपके पास क्या आ जाएगा? power की value क्योंकि 900,000 है, time is 60, you can find the work done by the driving force in this section. यहाँ पे आपको driving force नहीं पता थी, लेकिन आप work done by driving force figure out कर सकते हो using this. Can you all still hear me clearly? Because I think my other window is sort of stuck. Okay, all right. So I think it's working fine. My laptop it's stuck for some reason. Just refresh that. Okay. Yeah, I think it's fine now. अच्छा, इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं? We can find the work done. Work done क्या आ जाएगा? Can somebody tell me 900,000 into 60? What does this turn out to be? This is 54 million. ये हमारे पास आ गया work done by the driving force. ठीक है, zeros का ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत ही careless errors होते हैं इसके, so you have to be careful. This is 54 million. Okay, work done आ गया। हमारे पास resistance के against work done given है, work done by driving force given है. Now, what does that remind you of? How are all of these things connected? They're connected with the energy principle. If you remember, work done by the driving force is equal to change in kinetic energy plus the change in potential energy plus the work done against resistance, right? So this is the work energy principle that we have. We have got the work done by the driving force. Got the work done by the driving force. That is 54,000,000. ये हमारे पास है information. We also have the work done against resistance. Work done against resistance हमारे पास क्या आ रहा है? That is 46,500 kilojoules. So we've got to be careful. Kilojoules में है ये भी, तो ये इसमें 3 zeros हम extra add करेंगे. So we've got that given as well. 46,500 kilojoules. What about change in kinetic energy and the change in potential energy? Potential energy का change तो zero होगा because this is horizontal. तो potential energy में कोई change नहीं होगी, right? Potential तो change हो ही नहीं रही है. So that's going to be zero. What about kinetic energy? Kinetic energy, आपके पास initial speed क्या थी? 30 meters per second. 30 meters per second से इसने start किया, ठीक है? Up after 60 seconds, it has moved to some point here, but we don't know what the speed at that point is.
let's call that V, वही V आपको find करना. So what's the change in kinetic energy? Change in kinetic energy क्या हो जाएगी? We can use this formula for that. Half into mass. Mass इसका कितना था? It was 75,000 kilograms. Half into mass into V square minus U square, final speed, that is V square minus the initial speed ka square, 30 ka square. That's the change in kinetic energy. So you just have to formulate this equation and then you can solve this. You'll find the value of V from that. Okay? Can somebody do this for me quickly and tell me what this turns out to be? You आप इसको solve कर लेंगे और आपके पास result आ जाएगा. ठीक है? ये हो जाएगा इसके बाद. Okay, let me just show some working very quickly. So we have, अच्छा इसको मैं left side पे लेके जाके minus कर रहा हूँ वहाँ पे. Let's see what that turns out to be. 54 million minus 46.5 million. That is 7.5 million. So on the left side, I've got 7500 000. Zeros का बहुत ध्यान रखना है. 75,000 over 2. What's that? इसको भी जाके वहीं पे divide कर देते हैं. In fact, और multiply कर देते हैं. Let's see what we get from that. Into 2 divided by 75,000. So I've got V square minus 30 square on this side. Okay. Okay. Now, what do we have on the left side? Answer divided by 75,000 into 2. On the left side, I'm getting 200. Please correct me if that's wrong. V square minus 30 square. That goes to the other side. V square turns out to be 200 plus 900. That is 1100. And then we take square root of that. And that is 33.17. You can leave it like this if you want. Isko 33.2 like that. So that's better, but this is also fine. This turns out to be 33.2 meters per second. That's the velocity. That's the speed of the engine at the end of these 60 seconds. Okay. All right. So that was question number 5. Do we have another part for this? No. So that was question number 5. Okay. Yes. Thank you. That's correct. Let's move on. Next, we've got question number 6. So there's a block of mass, 5 kilograms, that is held in equilibrium near a vertical wall by 2 light strings and a horizontal force of magnitude x Newton. So you can see the figure. There is a vertical wall. That's here. उसके ऊपर 2 strings attached हैं और एक block है दरम्यान में. उस पे कुछ forces लग रही हैं. Now, what forces do we have acting on that block? We've got x Newton acting towards the right side. We've got 2 tensions. Now, we've got to be careful. Even though the angles are same, आप यहाँ पे देखें, these are 2 strings. These are 2 separate strings. इनकी tensions आपने equal assume नहीं करने हैं. They have to be different. Okay? Whenever we've got 2 different strings, we always assume different tensions. Okay? So we say, we've got T1 here, let's say. हम block के perspective से देख रहे हैं. Block के perspective से T1 is going to be acting in this direction and T2 is going to be acting in this direction. These are 2 tensions that are acting. 3 forces हैं आपके पास. X right पे लग रही है, T1 यहाँ पे लग रही है, T2 यहाँ पे लग रही है. You have to find the tension in the lower string. So you want the value of T2 given that X equals 100. So first part में उसने बता दिया आपको X की value 100 है. इसको यूज करके आपने T2 फाइंड करना. ठीक है. Now these are 3 forces. Those of you who know about Lamy's theorem, we could also use that. That's going to be very quick. But if you don't, the standard method of doing this would be to resolve the forces that we've got. ठीक है. Let's resolve the forces. X तो already horizontal है. Tension के components क्या हो जाएंगे? T1 के components. Let's figure them out. If this angle is 60, this is going to be 30, and this is also going to be 30.
T1 के components क्या हो गए? Vertical component is going to be T1 sine 30. It's on the other side of the angle. वहाँ पे sine लगेगा. The component that is adjacent to the angle, we have cos there, T1 cos 30. ठीक है, ये T1 के components हो गए. And then we have components of T2. We've got one component acting vertically downwards. That is, that's what? That is T2 sine 30. And this component acting towards the left side, that is T2 cos 30. In fact, we are missing a force there. इसका weight भी तो है. तो they're actually going to be 4 forces. Weight को include करके तो Lamy's theorem असल में नहीं apply कर सकते. यहाँ पे Lamy's theorem सिर्फ 3 forces के लिए होता है. We also have weight here. Weight include करके ये 4 forces हो जाएंगी. So that is not going to work. हमें resolve भी करनी पड़ती है. In any case, Lamy's theorem नहीं use करते यहाँ पे. Okay, so what's the weight? Weight is acting downwards. That is going to be 50 Newton. ये आपका weight आ गया. These are all the forces that we have acting on this. अब इनको resolve कर लें, इनको equate कर दें. We are in equilibrium. The block is in equilibrium. Equilibrium क्या मतलब है? Opposite forces equal होंगी. Left वाली forces right वाली forces के equal. Upward forces downward forces के equal. So we look at horizontal forces and we look at the vertical forces. Now, what are the horizontal forces? We've got X, we've got T1 cos 30, we've got T2 cos 30. We've got some vertical forces, which are T1 sin 30, T2 sin 30, and 50. ठीक है? अब of course, क्योंकि आपने T1, T2 को resolve कर लिया at this point, इनको तो नहीं consider करेंगे, उनके components consider करेंगे. ठीक है? आपके पास 2 equations बन जाएंगे यहाँ से. Let's write them down. Horizontal forces को equate करके हमारे पास क्या आ गया? Left side पे forces क्या है? T1 cos 30 plus T2 cos 30. That should equal the forces acting towards the right side. There's only one, that's X. Vertical forces हमारे पास क्या होगी? Upward forces T1 sin 30. Downward forces are T2 sin 30 and 50 Newton. We've got these 2 equations. We can solve them to find the value of T2. X उसने बताया हुआ है आपको. X की value उसने कहा है आपको 100 लेनी है first part के अंदर. So let's do that. We have cos 30. Cos 30 क्या होता है? Cos 30 is square root of 3 over 2. So square root of 3 over 2 into T1 plus square root of 3 over 2 into T2. That equals 100. And on the right side, we have T1 over 2 equals T2 over 2, because sin 30 जो है 1 over 2 होता है, plus 50. ठीक है? हमें T2 फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं? T2 को सब्जेक्ट बना के एक इक्वेशन से दूसरे में इनपुट कर देते हैं. T1 को सब्जेक्ट बना के T1 को एलिमिनेट करना है हमें, राइट? T1 को एलिमिनेट कर दें, so हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को, तो what do we get? We get T1 equals T2 plus 100. You can put this back in the first equation. यहाँ पे इनपुट कर दें. T1 equals T2 plus 100 and see what you get from that. Square root of 3 over 2 into T2 plus 100 plus square root of 3 over 2 into T2, that equals 100. We have square root of 3 over 2 T2 plus square root of 3 over 2 T2. 100 minus 100 square root of 3 over 2. ठीक है? And you see what you get from this. Left side पे मेरे पास आ रहा है square root of 3 times T2. Right side पे what do we get? 100 minus 100 square root of 3 divided by 2. On the right side, I'm getting 13.397. And then T2 turns out to be this divided by square root of 3, which for me is 7.735. This is the tension in the lower string. You can leave it like this if you want. If you do want to round it off, that's going to be 7.74 Newton. To 3 significant figures. Is that okay?
That was relatively straightforward, pretty standard. Let's move on to the next part now. Unless we have any questions, can we move on? Let's look at the next part. Find the least value of x for which the block remains in equilibrium in the position shown. Okay, now that's slightly tricky. Now, what I'm going to do for that is I actually want to copy this figure somehow. So how can I do that? Sure. Where's the right side focused there? Okay, so this is the figure that we have. अब उसने क्या कहा है? Find the least value of x for which the block remains in equilibrium in the position shown. अच्छा देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया है? हमने अपनी फोर्सेस को ऑलरेडी रिजॉल्व कर लिया. Let's actually just represent these forces here. Just try to understand what exactly is happening. We've got some downward forces. We've got weight of the object, that's 50 Newton. We've got a component of the tension acting upwards, T. So इसको हम represent कर लेते हैं, T1 कहा था हमने इसको. Yes, and this was T2. We've resolved these tensions. Upwards tension आपके पास यहाँ पे क्या आ रही थी? That was T1 sin 30. And the tension on the left side here was T1 cos 30. So again, okay, so the question is, okay, how is it not going to be always in equilibrium? ये हमेशा इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा. इक्विलिब्रियम ब्रेक कैसे हो सकता है? इक्विलिब्रियम ऐसे ब्रेक हो सकता है. लेट्स अज्यूम अब ये 100 न्यूटन थी ना ऊपर वैल्यू जब वो इक्विलिब्रियम के अंदर था. आप ये फोर्स बहुत ही कम कर दो. लेट्स से आप ये 1 न्यूटन कर दो. ठीक है. अब क्योंकि वेट भी तो है ना नीचे उसका लग रहा है, वेट नीचे लग रहा है. अब उसकी वजह से क्या होगा? आपकी ये फोर्स राइट साइड पे इट्स नॉट गोइंग टू बी सफिशिएंट टू कीप this string in a taut position, right? इसमें slack आ जाएगा. Exactly. So T2 will जो आपकी string 2 है नीचे वाली, that's going to slack. That's going to become slack. That's going to be a problem. Okay. So that's why it's not always going to be in equilibrium. There's going to be some minimum value जिस पे जाके आपका equilibrium break हो जाएगा. अच्छा, हमने इसको resolve कर लिया था. T1 के components निकाल लिए. T2 के components क्या होंगे? They're going to be T2 sin 30 and T2 cos 30. Okay. Now let's try to understand कि उसने exactly क्या पूछा. Because this is the tricky part here is to understand the statement properly कि उसने इसको exactly किस तरह से interpret करना. In the first part, this force was 100 Newton. ठीक है. अब 100 Newton राइट पे लग रही है. इसको बैलेंस करने के लिए आपकी दो फोर्सेस लेफ्ट साइड पे लग रही हैं that are going to keep this block in equilibrium. क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए. तो हम अगर फर्स्ट पार्ट में देखें हमने क्या किया था, हमने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो लेफ्ट साइड पे लग रही थी वो क्या लग रही थी? We had these two forces acting here on the left side. इनको हमने इक्वेट किया था x के साथ. Okay, let me just copy that because that's still going to be the same. I'll just write that here again. Horizontally आपके पास अभी भी वही आ रहा है, T1 cos 30 plus T2 cos 30 that equals x. Horizontally आपके पास वही components उसी तरह से बन रहे हैं. In fact, vertically भी अगर आप देखें तो आपके पास वर्टिकली भी वही दो कंपोनेंट्स, वही आपके पास इक्वेशंस बन रही हैं. वर्टिकली भी क्या हो रहा है? We've got T1 sin 30 acting upwards and T2 sin 30 and 50 acting downwards. अच्छा, अब देखिए कौन सी फोर्सेस यहाँ पे होनी ही है इन एनी केस. मतलब टेंशन तो चेंज हो सकती है लेकिन क्या यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता? चेंज ये नहीं हो सकता
इस ऑब्जेक्ट का वेट तो इसका चेंज नहीं होएगा, ठीक है। 50 न्यूटन नीचे को तो एक्ट कर ही रहा है, ठीक है। बाकी सारी चीजें अननोन है अभी, जो हम देखेंगे कि उनको क्या करना है, बाकी सारी चीजें अननोन है, लेकिन वेट तो हमें डेफिनेटली पता है 50 न्यूटन है, ठीक है। अब वेट को काउंटर करने के लिए कौन सी फोर्स है, वेट को काउंटर करने के लिए कौन सी फोर्स है? वेट को काउंटर करने के लिए देयर इज ओनली वन फोर्स दैट वी गॉट, वेट को काउंटर करने के लिए, दैट इज T1 sin 30. T1 sin 30 is the only force that we've got that is going to counter this 50 Newton, the weight of the ring. ठीक है, ये उसको बैलेंस करेगी। अब T1 का ही कुछ पार्ट लेफ्ट पे लग रहा होगा, कुछ पार्ट लेफ्ट पे लग रहा होगा, कुछ कौन सा पार्ट लेफ्ट पे लग रहा है? T1 cos 30, T1 cos 30 लेफ्ट पे लग रहा है। अब जो लेफ्ट पे फोर्स लग रही है उसको काउंटर करने के लिए हमें राइट साइड पे फोर्स चाहिए, x न्यूटन, राइट। उसको काउंटर करने के लिए राइट साइड पे फोर्स चाहिए, दैट इज x न्यूटन। ये जो नीचे वाली फोर्स है T2, दैट इज सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा, दैट इज ऑप्शनल। मतलब T2 के बगैर भी आपका जो ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम में रह सकता है। बिकॉज अगर हम T2 को इंक्लूड करते हैं, तो क्या होगा? T2 को इंक्लूड करते हैं तो T2 का एक कंपोनेंट लेफ्ट साइड पे भी आ जाएगा, जो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। और T2 का कंपोनेंट अगर लेफ्ट पे आएगा तो x की वैल्यू हमें और इंक्रीज करनी पड़ेगी। I hope I'm making some sense here. Let me write it down, that will make slightly more sense. And then vertically हमें कम से कम क्या करना पड़ेगा? इस 50 न्यूटन जो नीचे को फोर्स लग रही है इसको बैलेंस करना पड़ेगा। इसको कैसे बैलेंस करेंगे? जो आपकी अपवर्ड फोर्स है T1 sin 30, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इट हैज टू बी 50 न्यूटन। T1 sin 30 की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मिनिमम वैल्यू हम कह सकते हैं कि दिस हैज टू बी एटलीस्ट इक्वल टू 50 न्यूटन। 50 से ज्यादा हो सकती है अगर T2 का कंपोनेंट भी आ जाए, लेकिन कम से कम 50 तो होना पड़ेगा उसको, बिकॉज इट हैज टू बैलेंस दिस वेट दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। इससे हमारे पास T1 की क्या वैल्यू आती है? T1/2 50, T1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आती है 100। 100 न्यूटन इज द मिनिमम वैल्यू दैट यू नीड फॉर द टेंशन इन द अपर स्ट्रेंथ। दिस इज मिनिमम वैल्यू फॉर T1। अगर ये मिनिमम वैल्यू ऑफ T1 है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x क्या होगी? इस T1 का कंपोनेंट लेफ्ट पे कितना लग रहा है? T1 का कंपोनेंट लेफ्ट पे कितना लग रहा है? T1 का कंपोनेंट जो लेफ्ट पे लग रहा है, दैट इज T1 cos 30। अगर T1 को हम 100 लेते हैं यहाँ पे, 100 cos 30, that's gonna give us 100 into square root of 3/2, and that is 50 square root of 3। लेफ्ट साइड पर जो ये फोर्स लग रही होगी, नॉट दिस फोर्स, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपके पास? 50 स्क्वायर रूट ऑफ 3। T1 cos 30 जो ये वाली फोर्स है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 50 स्क्वायर रूट 3। इसको काउंटर करने के लिए राइट साइड पे फोर्स कितनी होगी? इट हैज टू बी एटलीस्ट दिस मच। सो द आइडिया इज ये जो हमारे पास फोर्सेस हैं सारी जो हमने रिप्रेजेंट की हैं, x की मिनिमम वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी? जब टेंशन 2 जो है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। टेंशन 2 को हम एलिमिनेट कर देंगे, हम कहेंगे कि टेंशन 2 T2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। दैट इज गोइंग टू गिव अस द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस x। Khizr, why not T1? Why can't T1 be 0? That's a good question. T1 0 नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि फिर इस वेट को कौन काउंटर करेगा? 50 न्यूटन को कौन काउंटर करेगा अगर T1 0 हो जाएगा तो?
T2 तो नीचे लग रही है ऑलरेडी, तो 50 जो वेट है, वेट को बैलेंस करने के लिए T1 का ये वाला कंपोनेंट हैज टू बी देयर, सो वी कांट मेक T1 0, वी कांट मेक T1 0, T1 0 नहीं हो सकता, राइट? T2 is the extra force that was supposed to hold the block in its position. अगर आप राइट साइड पे बहुत ज्यादा फोर्स लगा दो, जिस तरह पिछले पार्ट में 100 न्यूटन थी, अब कुछ पार्ट तो T1 cos 30 T1 हैंडल कर रहा होगा, कुछ पार्ट पे T2 हैंडल करेगा। हम इस X फोर्स को इतना छोटा करना चाहते हैं कि T2 जो है वो उसकी हमें जरूरत ही ना पड़े। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन इज, Fazan is saying, won't T2 slack then? So that's the point we're basically looking for, कि किस पॉइंट पे जाके T2 में slack आ जाएगा, किस पॉइंट पे जाके। So this is basically that cut off point. 50 square root of 3 एग्जैक्ट वैल्यू जो होगी, उसके ऊपर उससे थोड़ी सी आपकी कम वैल्यू होगी तो T2 will slack, राइट? फ्रैक्शनली कम होगी। इससे थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू होगी तो T2 की वैल्यू 0 से बड़ी चले जाएगी। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ द कट ऑफ पॉइंट। X की वैल्यू जो 50 स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगी तो T2 will be exactly 0, right? It will still be taut, लेकिन उसकी वैल्यू 0 होगी, उसमें स्ट्रेच नहीं आ रहा होगा कोई ज्यादा, right? It will be in its in a straight position, but it will not be stretched at that point. उसमें स्ट्रेच नहीं आ रहा होगा और स्लैक भी नहीं होगा। स्लैक कब होगा? अगर आपकी फोर्स ये 50 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से थोड़ी सी भी कम होगी, तब उसमें स्लैक आ जाएगा। ठीक है? So what are we going to do here? एक तो तरीका ये है, अब इस तरह से लॉजिकली सोच लें, जो हमने ऊपर जिस तरह से सोचा कि T1 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। T1 की मिनिमम वैल्यू हमारे पास यहां से आई, 50 न्यूटन नीचे लग रहा था। कम से कम आपको ऊपर कितनी फोर्स चाहिए? T1 sin 30 शुड बी मिनिमम 50। ठीक है? सो T1 की वैल्यू मिनिमम कहां से कितनी आ गई आपके पास? 100 न्यूटन के टेंशन इन द फर्स्ट स्ट्रिंग एंड द अपर स्ट्रिंग, दैट शुड बी मिनिमम 100 न्यूटन। ओके, जब वो आ गई तो हमने उसको यूज करके ये वाला कंपोनेंट निकाल लिया उसका, T1 cos 30, 100 को यूज करके। अब इसको यूज करके हम कह सकते हैं कि X की मिनिमम वैल्यू एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए 50 स्क्वायर रूट। दिस इज वन वे टू थिंक अबाउट दिस। अनदर वे इज, हम उसी तरह से जिस तरह हमने पहले वो दो इक्वेशंस बनाई थी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसमें हम क्या कहें, हम वो पॉइंट फाइंड कर रहे हैं जहां पे T2 जो है उसमें बिल्कुल स्लैक आने वाला होगा, right? It will just be about to slack, right? So it's the marginal value, yes. So it's that cutoff point where T2 is just about to slack, right? It's the cutoff point that we're looking for. इससे थोड़ी सी ज्यादा होएगी आपकी X फोर्स, तो T2 की वैल्यू 0 से ऊपर चले जाएगी। अगर 50 स्क्वायर रूट 3 से थोड़ी सी नीचे होगी तो स्ट्रिंग के अंदर स्लैक आ जाएगा, वो स्ट्रेट नहीं रहेगी। सो दिस इज द कट ऑफ पॉइंट जहां पे आपकी स्ट्रिंग स्ट्रेट रहेगी और उसमें स्लैक नहीं आएगा, लेकिन टेंशन 0 होगी, बिकॉज इट जस्ट it will not be applying any force on the block anymore. उसमें स्ट्रेच नहीं होगा कुछ। ठीक है? तो दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे T2 की वैल्यू को 0 इनपुट कर सकते हो, बिकॉज ऑफ दिस रीजनिंग दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। T2 को 0 इनपुट कर दें, उससे देखने आपके पास X की वैल्यू क्या आती है। If you were to input T2 equal to 0 here, you get T1 cos 30 equals X, and here you get T1 sin 30 equals 50, and again T1 comes out to be 100 from this. You put that in the first equation, and that gives you 100 cos 30, and X equals 50 square root of 3. So these are two ways of thinking about this. Okay. Yes, Fazan, that's correct. T2 is only needed to balance this X Newton force. लेकिन T1 के दो काम है। T1 इसको भी बैलेंस कर रही है, X न्यूटन को भी, लेकिन वेट को भी बैलेंस कर रही है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम कह रहे हैं कि अच्छा, since we want X to be minimum, हम लेफ्ट वाली फोर्स मिनिमम रखना चाहते हैं।
यानी लेफ्ट वाली फोर्स जो है हम कहते हैं सब काम T1 से ले लेते हैं, वी डू नॉट बॉदर T2 देयर, T2 वाली फोर्स को हम इग्नोर करते हैं, हम देखते हैं कि T1 मिनिमम कितनी फोर्स अप्लाई कर सकता है, हम सिर्फ उसको यहाँ पे यूज करेंगे, T2 इग्नोर कर देंगे, राइट। T1 इज स्टिल नीडेड बिकॉज ऑफ द वेट, तो हमें वो फिर भी यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ेगी, T2 हम इग्नोर कर देंगे, उसकी वैल्यू 0 ले लेंगे। Does that make some sense? It's quite tricky. If you still have any questions, make sure that you ask so that you have some clarity about why we are putting T1 0. Your questions इसमें बता दें मुझे. Is that okay? Okay, the question is, what if they had asked about the maximum value of x? Well, we don't know. Maximum value का मतलब है कि आपकी x फोर्स जितनी मर्जी राइट पे ज्यादा हो जाए, अब वो डिपेंड करेगा कि आपकी स्ट्रिंग कितनी स्ट्रांग है। लेट्स से मैं 1000 न्यूटन अप्लाई कर देता हूँ राइट साइड पे, मैक्सिमम बेसिकली वो पॉइंट होगा जहाँ पे जिस पॉइंट पे जाके स्ट्रिंग आपकी ब्रेक कर जाएगी। नाउ वी डोंट हैव अ मेथड ऑफ फाइंडिंग दैट, वो स्ट्रिंग की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि वो कब ब्रेक हो जाएगी, राइट। सो यू कांट फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू हियर, देयर इज नो वे टू डू दैट, वो स्ट्रिंग की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। ओके, yes, so these are two different ways of doing this. या तो आप इसको लॉजिकली, हमने ऊपर लॉजिकली सोचा उस तरह से, नीचे हमने इक्वेशन बना के सोचा, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। All right, are we okay with this? Okay, let's move on. Let's move on to the next one. This is question number 7. That's the last question on this paper. Again, this is a question that's quite tricky. Let's see how we're going to approach this. There are particles P and Q that have masses m kilogram and 2m kilograms, respectively. The particles are initially held at rest, 6.4 meters apart on the same straight line. Okay. This is m kilograms, this is 2m kilograms. They are initially held at rest. So दोनों की initial speed जब 0, keep that in mind. This is 0, this is also 0. दोनों 0 से start करें, initial speed 0 दोनों. They're 6.4 meters apart. Figure पे नजर आ रहा है आपको. Angle of the plane is alpha. Sine alpha is given, that is 0.8. Particle P is released from rest and slides down the line of greater slope. Simultaneously, particle Q is projected up. Okay, so P is coming down and Q is going up. Right, that's what is happening. And Q is projected at a speed of 10 meters per second. So that's another important point that you've got. Q is projected up at a speed of 10 meters per second. The coefficient of friction between each particle and the plane is 0.6. So that means the surface has friction as well. Right, this paper has friction in this as well. Okay. Now we need to show that the acceleration of Q up the plane is minus 11.6. So that's the first part that we have to do. Acceleration show करनी है, Q की acceleration up the plane is minus 11.6. अब इसमें तो P की तो बात ही नहीं हो रही, so we only have to consider Q right now. Now let's think of all the forces that are applying on the object Q. Q के ऊपर कौन कौन सी forces लग रही हैं? We've got the weight of Q that's acting vertically downwards. Weight कितना होगा? 2m is the mass. 2m times 10, that is 20m. That's the weight of the object Q. We have reaction. यहाँ पे हम reaction को consider करेंगे. Why? Because friction involved है, तो हमें reaction चाहिए होगा. We've got reaction. Reaction always acts perpendicular to the surface. That's going to be in this direction. What other force do we have? Q is projected upwards.
Since it is projected upwards, friction is going to be acting down the plane. So friction की direction क्या होगी? क्योंकि movement upwards है ना इस point के ऊपर. So friction is going to be in this direction. That's the direction of the friction. ठीक है? Now remember कि आपके object move कर रहे हैं. जब move कर रहे होते हैं object, we know कि friction अपनी maximum value पे होती है, F equals mu r in this case. So these are the forces that are acting on Q. There are no other forces. यही आपके पास forces हैं sir. There's no driving force. उसको आपने प्रोजेक्ट कर दिया है, बस प्रोजेक्ट करने के बाद कोई और वो फोर्स उस पर अप्लाई करती नहीं जा रही, बस एक बार प्रोजेक्ट करते हुए कर दी थी, अब वो प्रोजेक्ट हो चुका है, ड्राइविंग फोर्स अब कोई नहीं है उसके ऊपर. ठीक है, सो देयर इज नो फॉरवर्ड फोर्स हियर एज सच. नाउ F and R आर ऑलरेडी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. उनको तो रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है. वेट के कंपोनेंट्स क्या होंगे? लेट्स फिगर देम आउट. 20m का कंपोनेंट अलोंग द प्लेन is going to be 20m sine alpha. Along the plane वाला component sine of the angle angle to the horizontal होता है. plane का जो angle है horizontal के साथ, ये वाला component क्या हो जाएगा? इसका हम cos लगा देंगे. 20m cos alpha. Again, why? If this angle is alpha, this angle is also alpha. इसकी वजह से जो angle के साथ वाला component है इसको हमने cos लगा दिया, जो angle के दूसरे वाला component है उस पे हमने साइन लगा दो. Now we have resolved the forces. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? We'll just use simple Newton's second law of motion along the plane or perpendicular to forces आपकी equal होंगी of course. So let's think about it. We've got some forces that are acting perpendicular to the plane. We've got R here and 20m cos alpha. They are acting perpendicular to the plane. Parallel to the plane हमारे पास क्या है? We've got F, we've got 20m sin alpha. ये दो forces आपकी act कर रही हैं parallel to the plane. Okay. Let's write that down. We've got some horizontal forces. Horizontally हम क्या करेंगे? Sorry, not horizontal. We'll say parallel to the plane. We've got some forces that are parallel to the plane. Parallel आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हम RF equals ma अप्लाई कर देंगे. Resultant force equals mass into acceleration. Perpendicular to the plane. तो आपकी मूवमेंट नहीं है ना, मूवमेंट तो आपकी पैरेलल टू प्लेन है, अलोंग द प्लेन है. परपेंडिकुलर तो कोई मूवमेंट नहीं है, तो परपेंडिकुलर फोर्सेस क्या होंगी? दे आर गोइंग टू बी इक्वल टू ईच अदर. आर की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? रेजिस्टेंस जो है, रिएक्शन जो है, नॉर्मल रिएक्शन, R is going to be equal to 20m cos alpha. ठीक है, अच्छा. So you've got 20m cos alpha there. Resultant force equals mass into acceleration. Now what is the forward force? What is the forward force? What's the forward force? Anyone? आपकी मूवमेंट ऊपर को है, क्यों ऊपर को जा रहा है? Is there any forward force? There's no forward force. That's basically zero, right? So हम zero लिख सकते हैं if we want. Ignore भी कर सकते हैं. What are the backward forces जो आपके motion को oppose कर रही हैं? We've got friction and we've got 20m sin alpha, and that equals mass of the object. Mass कितना है? Remember, this mass is not the same as this m that's written there. m की value यहाँ पे इस केस के अंदर q का mass कितना है? q का mass 2m है, m की जगह पे यहाँ पे 2m डाल देंगे. Okay, so be careful about that. So we got 2m times acceleration. ठीक है, ये हमारे पास दो equations आ गई. Now we've got the value of sin alpha. Sin alpha उसने बताया है 0.8 है. Okay, so sin alpha is 0.8. We also have to use cos alpha there. तो sin alpha अगर पता है, हम इसको use करके cos alpha निकाल सकते हैं. आप alpha निकाल लें, उससे cos निकाल लें, या फिर आप right angle triangle use कर लें. It's your choice. 0.8 basically means 4/5. तो आप उस पर right angle use कर सकते हैं. You can say sin is perpendicular over the hypotenuse. तो perpendicular की वैल्यू आपके पास क्या होगी? 4 होगी. hypotenuse की वैल्यू 5 होगी. इससे आपके पास बेस आ जाएगी using Pythagoras.
base is going to be square root of 5 square minus 4 square, which is 3. Base की value 3 आ गई, तो cos alpha क्या हो जाएगा? That's going to be base, which is 3 over the hypotenuse, that's 3 over 5. तो cos alpha की value हमारे पास आ गई 0.6. That's one way to do it. जब exact values होती हैं, तो हमें ये definitely use करना होता है. जब exact value उसने मांगी हो, इस केस में उसने exact नहीं पूछा, तो आप calculator से भी कर सकते हो. That's also fine. But we have the value of cos alpha now. Cos alpha is equal to 0.6. So you got sin alpha and cos alpha. Values input कर देते हैं, and we'll find the unknowns. Cos डाल दें पहले यहाँ पे. R equals 20m into cos alpha, that is 0.6. What does that give us? 0.6, that's 12m. R की value 12m होगी. अब लेफ्ट वाले इक्वेशन में देखें, सिंस वी नो कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फ्रिक्शन की जगह म्यू आर डाल देंगे. वी आर गोइंग टू इनपुट म्यू आर. व्हाई? बिकॉज ऑब्जेक्ट मोशन में, जब मोशन में होते हैं, फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर होती है. दैट्स गोइंग टू बी माइनस म्यू टाइम्स आर minus 20m into sin alpha. Sin alpha was 0.8 equals 2m into acceleration. अच्छा, म्यू की वैल्यू उसने दी हुई है. म्यू is 0.6. R हमने फाइंड कर लिया, that is 12m. And if you were wondering, m is going to cancel out now. This is 16m, right? 8 into 2, yeah, so that's 16. On the other side, we've got 2m. हर टर्म के अंदर m आ रहा है, m cancel हो गया. What do we get from this? 12 into 0.6. Anyone? 7.2 minus 7.2 minus 16, that equals 2a. And that gives us minus 23.2 equals 2a. And a equals minus 11.6 meters per second square. And that's what we had to prove there. ये हमारे पास acceleration की value आ गई. All right, any problems with this? Yes, Khadija, that's correct. This paper is indeed quite hard. It's not normal. इसी सेशन के अगर आप बाकी दोनों कंपोनेंट्स देखें, उनके relatively higher thresholds हैं. ये वाला कंपोनेंट ज़्यादा मुश्किल है. Sometimes it happens unintentionally as well. Because इस क्वेश्चन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशन है. Maybe they did not realize it when they were when they made this question. बाद में उनको realize हुआ शायद कि this was much more complicated than the questions that they had in the other variants. But if this happens, they do adjust it at the end. आपका threshold low कर देते हैं उसके accordingly, so it doesn't really affect at the end, affect your grades at the end generally. ठीक है, बस you have to give your best. इस पेपर के अंदर 28 के ऊपर A था, 28 out of 50. That's a pretty low threshold. अगर आप ये मुश्किल वाले पार्ट सारे छोड़ भी दें, 28 तो आपके फिर भी आ सकते हैं in the easier parts. उसका mass, yeah, so you understood that basically Q का mass 2m था, right? So it's basically there. Shazreen, I am not sure. Was it there? M1 is the one मैंने नहीं बनाया. I don't think it was there. I don't remember this question. Was it? Okay. अच्छा, मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है. Okay, let's look at this. Find the time for which the particles are in motion before they collide. Find the time for which the particles are in motion before they collide. M1 actually मैंने बनाया था, मुझे अभी याद आया. So yeah, so actually I maybe did not solve, I did not solve this question before making the paper. मेरा ख्याल है मैंने M1 मैंने बनाया था portfolio exam का, and I'm actually sorry about that. After going looking at this question, it was a bit harsh on you guys, I think, but it's okay. It is not going to, it's not really going to matter at the end, inshallah. Exams आपकी होंगे तो portfolio exams are not as important really. Okay,
अच्छा, let's look at this. Find the time for which the particles are in motion before they collide. Time for which the particles are in motion before they collide. Let's look at this figure again. अब हम दोनों particles की collision की बात कर रहे हैं, ठीक है? P is moving downwards, Q is moving upwards. At some point they collide. उस collision तक कितना time आपका पास हो गया, ये हमें figure out करना, ठीक है? Now, what is the information that we're given? P starts from rest. P ने ऊपर rest से start किया, वो नीचे को आ रहा है. Q was projected upwards like this. And we have already found the acceleration of Q in the first part. That is minus 11.6 meters per second square. Okay? That's what you found in the first part. Now, the complication here is that we do not know whether Q is going to be moving upwards at the point the collision happens. मतलब Q जब ऊपर, क्या ये situation है कि Q ऊपर move कर रहा है और P नीचे move कर रहा है जब वो दोनों collide करते हैं, या फिर ये situation है कि Q ऊपर गया और फिर वापस आ गया और फिर वापस आते हुए P ने आके collide किया. Now, why is it important? Why is it important? Why is it important to know this? अगर तो फ्रिक्शन नहीं होती ना यहाँ पे, अगर फ्रिक्शन नहीं होती फिर कोई मसला नहीं था, फिर आपको ये फिगर आउट करने की जरूरत नहीं थी. अगर ये स्मूथ प्लेन होता तो क्यू की क्या डायरेक्शन है, वो ऊपर जाते हुए उसने हिट किया है या वापस आते हुए हिट किया है, दैट वाज नॉट इम्पोर्टेंट. व्हाई? बिकॉज फिर आपकी एक्सेलरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना था, थ्रू आउट आपकी सेम एक्सेलरेशन रहनी थी. क्यू की एक्सेलरेशन ऊपर जाते भी वही होती, नीचे जाते भी वही होती, सेम एक्सेलरेशन होती, वो चेंज ना होती. लेकिन क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है, उस वजह से मसला क्या हो रहा है, क्यू जब ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन नीचे लग रही है, और अगर क्यू टर्न ले लेता है वापस, उस पॉइंट पे फ्रिक्शन आपके ऊपर लगने लग जाएगी. अब क्योंकि आपकी एक फोर्स चेंज हो जाएगी, आपकी एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगी अगर क्यू नीचे मूव करना शुरू कर दे तो. So that's the difficulty here. That's the complication here. कि अगर तो क्यू ऊपर मूव करते हुए कोलाइड कर देना फिर तो मसला नहीं है, फिर हमें कोई बहुत ज्यादा एडिशनल चीज नहीं करनी पड़ेगी. लेकिन अगर वो वापस टर्न कर लेता है फिर उसकी एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगी. ऊपर जाते हुए और एक्सेलरेशन थी which was minus 11.6, नीचे आते हुए चेंज हो जाएगी क्योंकि फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, उसकी वजह से आपकी एक्सेलरेशन डिफरेंट होगी. ठीक है? So the first thing that we have to figure out here is, do they collide while Q is moving upwards, or do they collide when Q has started returning back? Okay. Yes, Fazan. So we have to find out at what point Q starts coming back downwards. That's what we have to figure out. Now, how do we find that? Q के बारे में हमारे पास क्या क्या information है पहले, let's write that down. Q के बारे में हमें क्या क्या पता? We know about its initial speed. It was projected at 10 meters per second. 10 meters per second पे इसको project किया था upwards direction के अंदर. So we're taking upwards as positive. ये वाली direction positive ले रहे हैं. This direction में इसको project किया था. Initial velocity was 10 meters per second. We know acceleration. We found that in the first part, that was minus 11.6. Now, if we want to find out at what point Q started its return journey, नीचे आना कब शुरू किया, how do you figure that out? जब अपने maximum point पे पहुंचेगा उसकी velocity क्या होगी? Let's say वो ऊपर जाते जाते इस point पे आके उसने वापस लिया, इस point पे उसकी velocity क्या होगी? उसकी velocity 0 हो जाएगी. Right? जब अपनी maximum point पे पहुंचेगा उस point पे उसकी velocity 0 हो जाएगी. हम क्या करेंगे यहाँ पे v के value 0 input कर देना.
ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा द पॉइंट एट विच क्यू स्टार्ट्स रिटर्निंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, अच्छा, कैन वी फिगर दैट आउट नाउ? वी कैन फाइंड the displacement until that point and we can also find the time until that point. So let's figure that out. यहाँ पे distance find कर लेते हैं और time find कर लेते हैं, कितना time लगा वहां पे जाने में. How do you find that? We can use VUA, V equals U plus AT use कर लेते हैं. V is 0, U is 10, A is minus 11.6 and T is the time. Now from here we get 10 over 11.6. We get a value for T here. What's that? 10 over 11.6. 4.3? It can't be 4.3. 0.8621. That's what I'm getting. Okay? At least 4 significant figures रखने हैं आपने working के अंदर. This is the time at which, the time instant at which Q reaches its maximum point, maximum height. Time when Q starts moving downwards. Okay, अच्छा, टाइम आ गया हमारे पास. अब हम क्या कर सकते हैं, इसका डिस्टेंस ट्रैवल भी फाइंड कर सकते हैं कि हमें पता चल जाएगा अच्छा Q किस पॉइंट पे पहुंच गया होगा इतने टाइम के अंदर. डिस्टेंस ट्रैवल कैसे फाइंड कर लें? वी कैन यूज 2as equals b square minus u square. Let's use that here as well. Two as equals b square minus u square. What does that give us? 2 into minus 11.6 equals 0 square minus 10 square. We'll get a value for acceleration from here. You can see what that turns out to be. Okay, so 4.3 displacement area. Okay, is that exact? 100 divided by 23.2. Yeah, so we can't use 4.3, Iman. We can't use 4.3. It should be more exact. It should be more accurate. So this is 4.310. So at least 4.31 रखना है. Otherwise आपके final answer सही नहीं आएंगे. ठीक है? This is the displacement. This is the point at which Q starts its return journey. ठीक है? ये आ गया हमारे पास. अब हमें क्या figure out करना है? क्या इस point तक या इतने time के अंदर P इतना नीचे आ गया था कि उसने उसकी collision होगी इसके साथ या नहीं होगी? अब हमें Q का distance travel find करना है इतने time के अंदर. How can we find that? P के बारे में हमें क्या क्या पता है? Let's write that down here as well. Now, what do we know about P? We know initial speed of P. Okay, we know initial speed of P. Initial speed of P is 0. It starts from rest. What else do we know? हमें time कितने time तक देखना है? हमने time देखना है 0.8621. इतने time में हमने देखना है अभी के लिए कि जब Q ने अपनी return journey start की, तब तक P ने कितना travel कर लिया था. ठीक है? These are two pieces of information that we've got. Do we know anything else? Do we know displacement of P? We don't. Do we know acceleration? We don't. What else? Do we know the final velocity? We don't. बाकी तो कोई information नहीं है हमारे पास. हमें at least तीन चीजें तो चाहिए होती हैं. So what do we do now? P की हमें देखना पड़ेगा, इसकी acceleration हम find कर सकते हैं किसी तरह से. So let's use the same method that we used for the acceleration of Q. P के लिए भी ये same method use करते हैं. P के ऊपर कौन सी forces लग रही हैं? P के ऊपर हमारे पास एक तो weight का component होगा. Weight नीचे को लग रहा है. That is going to be 10m. What's the component of weight along the plane? This is going to be 10m sine alpha. ये आपका weight का component नीचे लगेगा. What other force do we have along the plane? We've got friction. Friction is acting up the plane. ये आपकी friction है इस direction के अंदर. ठीक है, this is the second thing that we have. Anything else?
that's acting along the plane, that's it basically. इसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप फाइंड कर सकते हो इसकी एक्सेलरेशन। अब उसकी एक्सेलरेशन के लिए आपको फ्रिक्शन चाहिए होगी, फ्रिक्शन आपके पास म्यू आर से आएगी, तो हमें परपेंडिकुलर फोर्सेस पे देखनी पड़ेंगी। परपेंडिकुलर फोर्सेस क्या होंगी, दिस इज आर एंड दिस इज गोइंग टू बी वेट का कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन विच इज 10m cos अल्फा। ठीक है, अब P के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो इसकी एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, now before we actually do any of this, P की एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। P की एक्सेलरेशन कैसे आएगी, अब फॉरवर्ड फोर्सेस 10m sin अल्फा, 10m sin अल्फा, ये नीचे का फोर्स लग रही है। ठीक है, that's this force. We've got a backward force, that's friction, इसमें से माइनस कर दें फ्रिक्शन, उसकी जगह आप डायरेक्टली म्यू आर लिख सकते हैं if you want. That equals mass of P which is m into acceleration. ठीक है, लेकिन अब आपको R चाहिए, R की वैल्यू क्या होगी, 10m cos अल्फा, वो भी साइड पे लिख लेते हैं। R equals 10 into m cos अल्फा। जो हमने P के लिए पहले किया था वो हमें यहाँ पे Q के लिए भी करना पड़ेगा। Now what's the value of R that we get from this, 10 into m into cos alpha, cos alpha की वैल्यू क्या थी, 0.6, we input that here, R equals 6m, अब 6m को यहाँ पे जाके इनपुट कर दें, 10m sin alpha, फ्रिक्शन की जगह पे म्यू आर आ गया, म्यू की वैल्यू वाज 0.6, R is 6m, we've got ma on the other side, m सारे कैंसिल हो जाएंगे, साइन अल्फा की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या था 0.8 आई थिंक, साइन अल्फा was 0.8, yes. Now we just solve this, हमारे पास क्या आ गया, m तो सारे कैंसिल हो गए, acceleration turns out to be what, 8 minus 3.6 which is 4.4, yes, so that's 4.4 meters per second square. ये आपकी P की एक्सेलरेशन आ गई। ठीक है, अब P की एक्सेलरेशन आ गई तो अब क्या होगा, आपके पास इनिशियल स्पीड है P की, टाइम है और एक्सेलरेशन है, अब दैट इज 4.4. What we can do now is we can find the displacement of P in this time interval. ठीक है, P ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, U, T और A हैं, क्या यूज कर सकते हैं, we can use S equals UT plus half AT squared, let's use that. S equals U, that's 0 into time, जो मर्जी और doesn't really matter, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, plus half into A, that is 4.4 into time का square, that's 0.8621 whole squared, and that's going to give you the displacement covered by the particle P. ये क्या आता है, 2.2 into 0.8621 का square, I'm getting 1.635. 1.635, this is the displacement of P and this was the displacement of Q earlier. ये उन्होंने ट्रैवल किया है while Q was moving upwards. ठीक है, जब Q ऊपर जा रहा था उस टाइम के अंदर Q ने इतना ट्रैवल किया है, P ने इतना ट्रैवल किया है, what's their sum, इनको ऐड करें, आपके पास क्या आता है, 4.310 plus 1.635, what's that, plus 4.310, 5.945. This is the distance covered while Q was moving upwards. ये उतने टाइम में जितना डिस्टेंस कवर हुआ है, दैट इज 5.945 मीटर्स। ठीक है, जब Q ऊपर को मूव कर रहा था, टोटल डिस्टेंस कितना था उनके में स्टार्ट में, इट वाज 6.4, और दैट मींस इज अभी तक वो कोलाइड नहीं किए हैं।
इसके बाद में Q ने नीचे मूव करना शुरू कर देना है. So Q is actually moving down the plane when collision happens. ठीक है. अब क्या होगा? अब आपको Q की डाउनवर्ड एक्सेलरेशन फाइंड करनी है. Q की डाउनवर्ड एक्सेलरेशन फाइंड करनी है. It was 5 marks. I'm pretty sure examiner did not know about this before they set the exam up. उनके बाद में पता चला कि इतनी ज़्यादा working यहाँ पे चाहिए थी. Maybe they did not solve it before giving this in the exam. Otherwise, it definitely does not deserve 5 marks. It should have been much more. We're not done yet. हमें सिर्फ ये पता चला अभी तक कि Q जब ऊपर मूव कर रहा था तब कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो चुका है. ठीक है. अब इस पॉइंट के ऊपर क्या सिचुएशन है? इस पॉइंट के ऊपर क्या सिचुएशन है? यू आर समवेयर हियर. उसके बाद इट्स रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड. We know that we are on this inclined plane in such a way that P is here, Q is here, और इनमें कितना डिस्टेंस रह गया अब आपस में जो रिमेनिंग डिस्टेंस है? Let's figure that out. 6.4 minus 5.945. What does that give us? That gives us 4 point something. No, 0.4 something. ये क्या आता है? 6.4 minus answer, that's 0.455. This is the distance that they still have between them. 0.455 meters. अब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? P भी नीचे मूव कर रहा है और Q भी नीचे मूव कर रहा है. दोनों पार्टिकल्स इस पॉइंट के ऊपर आके अब नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ठीक है. So what do? We find their downward displacements और उनको हम उनका difference इसके equal कर देंगे. That will be the point that when they collide with each other. So let's consider the two particles again. P के बारे में अब इस point से onwards हमारे पास क्या information है? अब हम इस point से onward बात करें, right? जब वो यहाँ पे पहुंच के जब उनका distance इतना हो गया. अब इस point के ऊपर do we have the acceleration of P? Acceleration of P तो वही है 4.4 meters per second square. Time नहीं पता, acceleration पता है, displacement नहीं पता, velocity, initial velocity हमारे पास आ सकती है यही पहले वाले information से. हमने जहाँ पे displacement निकाली थी उस point के ऊपर इसकी velocity भी निकाल सकते हैं. हम यहीं पे इसको add कर लेते हैं. इतने टाइम के अंदर उसकी velocity कितनी थी? Let's figure that out. That's going to be U, which was 0, plus A, that's 4.4, into 0.8621. What does that give us? That gives us 4.4 into 0.8621. That is 3.793. Yeah, 3.793. This is the velocity that P had at the point Q started moving downwards. इस point के ऊपर P की velocity कितनी है? 3.793. ठीक है. इस point के ऊपर this is the velocity of P. तो अब हम क्या कहेंगे? P की initial velocity इस point के ऊपर हम ले सकते हैं 3.793. ठीक है. इस point के ऊपर this is the initial velocity of P. ये दो चीजें आ गई हमारे पास. अच्छा, let's consider Q. Q के बारे में हमें क्या क्या पता है? Q की initial velocity क्या है? This is basically the point at which Q started returning. उसने नीचे मूव करना शुरू किया था इस point के ऊपर. तो Q की initial velocity क्या होगी? That's going to be 0, right? Because वो उसने turn लिया यहाँ पे, velocity 0 हो गई थी. इसके बाद उसने नीचे जाना शुरू किया. What else do we know about Q? Not much. इसकी acceleration हमें find करनी पड़ेगी. अब acceleration, if you think about it, जो P की acceleration है, वही essentially Q की भी acceleration होगी. Because आप देखें calculation के अंदर जो हमने calculation की थी, mass आपका वैसे ही eliminate हो गया था, cancel out हो गया था. तो mass अगर m के बजाय 2m भी कर दें, तो आपकी acceleration तो कोई फर्क नहीं पड़ता. Everything else is just the same.
But if you want, you can just evaluate it again. आप कर सकते हैं. If you don't understand why it's going to be the same. Q के ऊपर कौन कौन सी forces लग रही हैं? अब Q के ऊपर आपके पास एक force नीचे लग रही है. That is 2m sin alpha. This is the component of the weight. We've done this multiple times before. एक force ऊपर लग रही है. ऊपर को friction लग रही है. ठीक है? ये दो forces लग रही हैं. So we can say जिसका हमने पहले यहाँ पे लिखा था 2m sin 20m sorry this is not 2m 20m होना चाहिए. weight की बात कर रहे हैं. So it's going to be 20m sin alpha minus friction, which is mu r, equals mass, which is 2m into acceleration. ठीक है? r की वैल्यू अभी भी वही है जो पहले थी. That was what was that? P में r क्या आ रहा था? Q में सॉरी Q की बात कर रहे हैं. Q में हमारा r क्या आ रहा था? 12m, right? r की वैल्यू अभी भी वही है 12m. Yeah, so this was 12m. r की वैल्यू 12m है. ठीक है, इसमें इनपुट कर दें 20m into 0.8 minus mu, that is 0.6 into r, that is 12m. यहाँ पे evaluate कर लें. यहाँ से भी आप देखेंगे acceleration की वही वैल्यू आ जाएगी. p की जो थी acceleration q की भी वही आनी चाहिए यहाँ पे. But you can try that. 16 minus 12 into 6 and then divided by 2. No, 16 minus 12 into 0.6 that divided by 2, that turns out to be 4.4. ठीक है, ये 4.4 आ गई. ये acceleration भी उतनी है. तो यहाँ पे acceleration आप कहोगे this is 4.4. अब दोनों की displacement क्या हो जाएंगी? SP is going to be equal to 3.793 t plus half into 4.4 t square. SQ क्या हो जाएगा इस पॉइंट के onwards? 0t, that's just 0, plus half into 4.4 into t square. अब क्योंकि p जो है वो ऊपर है 0.455, q नीचे है, तो जब कोलाइड करेंगे p ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, q ने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा. So we can make an equation like this. We can say SP minus SQ should be equal to 0.455. We can either write it like this, or we can say SP is equal to SQ plus 0.455, right? क्योंकि SP जो है वो बड़ा होगा, वो ज्यादा होगा, P ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, Q ने कम किया होगा. We make an equation like this. इसमें ये values input करें and then solve that. You'll find a value of T from this. This is 2.2 t square. On the right side, you've got 2.2 t square. No, yeah, 2.2 t square minus, am I missing something? Yeah, plus 0.455. ठीक है, यहाँ से आपके पास t की वैल्यू आएगी. What does that turn out to be? ये तो cancel हो गया. T is 0.455 divided by 3.793, and that is 0.12. This is the time that it takes. This is the time that it takes after Q has started moving downwards. Q जब नीचे मूव करना शुरू कर दिया, उसके बाद इतना टाइम लगा है. उससे पहले कितना टाइम लगा था? उससे पहले ये टाइम लगा था 0.8621. You just add these two time values. The total time taken is equal to 0.8621 plus 0.12, and that's going to be 0.9821. And that was supposed to be your final result there. Okay, that's not worth the 5 marks. If I was there, I would probably leave it for the end, or ये probably नहीं complete होता time के अंदर. And
that's the reason the threshold for this paper was that low. Okay, 28 threshold M1 का इसी वजह से नीचे इतना आया, because this was not doable in time. Okay, this was pretty long. Okay, so yeah, so those of you who are feeling that way, I totally understand. It's not fair for 5 marks this much work. Okay, but that's what you had to do. That's the concept. That's what you would have done if you had a lot of time for this. Okay, let's do the last part. That's relatively easier, लेकिन वो ये कि last part तभी हो सकता है जब आप इसका ये वाला part कर दो. इस part की values आगे use होंगी, so we need to have done this part for the last part. Again, last part is relatively easier. Let's quickly do that and then we end for today. Salim, I'm really sorry. S2 हम नहीं cover करते लाहौर में, so I will not be doing that. Zen P3, I'm not sure what you mean by that. P3, कौन सा P3? Okay, the particles coalesce on impact. अब जब impact होता है उस point पे जाके, they coalesce, so they become one single object उस point के ऊपर. अब आपको क्या करना है? Speed find करनी है combined particle की immediately after the impact. So this is momentum, right? Collision के बाद क्या हो रहा है? So momentum before collision, right before collision is equal to the momentum right after collision. अब before collision momentum के लिए हमें क्या चाहिए? We need velocities of P and Q at the time of collision. Collision time के ऊपर velocities चाहिए दोनों की. अब वो कैसे find कर सकते हैं? Again, let's consider those two objects separately first. P की velocity क्या होगी at the time of collision? हमें पता है कि time कितना लगा था? 0.12 seconds लगे थे ना? इस point से onward. तो हमारे पास P की information है कुछ यहाँ पे. P की information क्या है? We know acceleration is 4.4. Acceleration is 4.4. We know that initial velocity for P was 3.793. We know the time taken for this part, that was 0.12. ये 3 pieces of information है हमारे पास. हम क्या कर सकते हैं इससे? हम final velocity find कर सकते हैं P की, क्योंकि 0.12 seconds के बाद collision हो गई थी ना, तो 0.12 seconds के बाद आपकी जो velocity थी वो हम find कर सकते हैं यहाँ से. किस तरह से? V equals U plus 80 use कर लें, right? So V equals U plus 80. This is going to be the velocity of P at the time of collision. And that is 3.793 plus 4.4 into 0.12. You can see what that turns out to be. Velocity of P at the time of collision, 3.793 plus 4.4 into 0.12. I'm getting 4.321 for this. Similarly, you can do the same thing for Q. Q की velocity क्या थी at the time of collision? You know the acceleration was 4.4 for this as well. Initial velocity for this was 0. And the time taken is also 0.12. So VQ आपके पास क्या आ गया? That's going to be 0 plus 4.4 into 0.12. This is the velocity of Q at the time of collision, which is 0.528. ठीक है, these are velocities at the time of collision. अब आप कह दें momentum before collision should equal momentum right after collision. Okay, before collision momentum क्या है? P का mass कितना था? P का mass was m, Q was 2m. So P is m kilograms and Q is 2m kilograms. So momentum of P क्या होगा before? Momentum of P is going to be mass of P into velocity of P, that is 4.321, plus the momentum of Q, that's mass of Q, into velocity of Q, that's 0.528. What's the momentum afterwards? बाद में coalesce कर गए, so it's one single object, that is m plus 2m multiplied by the velocity of that combined object. वो आपको find करनी है. Let's call that PQ. You can figure this out. ठीक है, ये आप देख लें क्या आ जाता है.
So you have 4.321 m plus 0.528 into 2, that's 1.056 m equals 3 m VQ. M हम सारे cancel हो गए. VQ is going to be equal to 4.321 plus 1.056. That is 5.377 divided by 3. This is the velocity of the combined object, VPQ, which turns out to be 1.792 for me. The velocity of that combined object, coalesced object, is 1.792 meters per second. Okay, so that ends this marathon question. It was pretty long. The first and last parts were relatively easier, but the second part was extremely difficult and extremely long. But yeah, so that's what you were supposed to do there. Okay, I hope that makes sense. If you have any questions, you can let me know. Otherwise, we stop here. For tomorrow, the plan is we are going to be doing this paper, November 21, paper 5.1, inshallah. ये हम कल करेंगे.